Hello and welcome everyone. This is the third video for January, the current affairs for the month of January. The previous two videos you can watch on the channel. So we'll be starting right away. The first news for the day, that is there has been a launch of a new project by the name of Naksha. Naksha project karke Ministry of Rural Development has launched a new project, that is the full name of this one is National Geospatial Knowledge Based Land Survey of Urban Habitation. This particular project, that is the Naksha project, this is the National Geospatial Knowledge Based Land Survey of अर्बन हैबिटेशन और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने. द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज लॉन्च दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड रिमेंबर दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट. ये एक पायलट प्रोजेक्ट है which has been started in 150 cities on India. और यहाँ पर क्या हो रहा है with this particular project, there has been a creation of updated digitized land record in these particular cities. तो ये जो 150 cities हैं, यहाँ पे जो अर्बन जो रीजन्स हैं, जो अर्बन हैबिटेशंस हैं, उनके लैंड रिकॉर्ड का सर्वे यहाँ पे देयर विल बी एन अपडेटेड डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. रिमेंबर दिस इज ओनली अ पायलट प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम by 2026 2027 this will be expanded to all the other cities in the world. So the Naksha project, that is the National Geospatial Knowledge Based Land Survey of Urban Habitation, this project has been launched by Ministry of Rural Development. And why it has been launched? This has been launched to create the updated digitized land record in the urban regions. It is a pilot project which has been launched in 150 cities. The nodal ministry for this is the Ministry of Rural Development. Similarly, aside from the Naksha project, there have been some other project as well, some other initiative from the Ministry of Rural Development regarding the modernization of land records in India. Land record which has been a big problem, एक बड़ी problem रही है हमारे लिए in our country. So उसको update करने के लिए, उसको management के लिए proper the various initiatives have been started by the government, that is under the ministry, that is Ministry of Rural Development. तो यहाँ पर we have one more project, that is the Digital India Land Record Modernization Project. Digital India Land Record Modernization Project है जिसके अंडर most of these things are being done, and under this particular project 95% digitization of land record has been done. तो जितना भी इंडिया में टोटल whatever lands are there and whatever land records are there, उनका 95% land records का digitization हो चुका है under the scheme, that is Digital India Land Record Modernization Program. There is another scheme, that is the Swamitwa scheme. तो Swamitwa scheme has been used to map the land parcel in the village area. जो village areas हैं, रूरल रीजन्स हैं, वहां पर लैंड पार्सल्स की मैपिंग के लिए दिस प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड बाय द सेम मिनिस्ट्री, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. रिमेंबर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इट्स काइंड ऑफ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम जिसके अंडर और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं. सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स अंडर DILR MPR, द फर्स्ट वन इज अ भू आधार. भू आधार या जिसको UL पिन बोला जा रहा है, दैट इज द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर. सो दिस इज अ 14 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट विल बी गिवन टू ईच लैंड पार्सल. हर एक लैंड के लिए एक पर्टिकुलर UL पिन को जनरेट किया जा रहा है अंडर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, दैट इज द भू आधार या फिर द ULPIN इनिशिएटिव, दैट इज द यूनिक लैंड parcel identification number initiative. And remember, a proper digitization and by creating a proper bhu aadhar or creating a proper UL pin for a particular land will help a lot in you can say streamlining the real estate transaction, property dispute solve करने में it will be helpful, plus disaster management efforts को improve करने में भी this will play a very important role. The second thing in this particular program is the NGDRS, or what we call as the National Generic Document Registration System. It's a e-registration system, एक electronic registration system है, which will we can say basically ensure a uniform process for registration. जो document registry जो होती है land के लिए, तो उसके लिए एक online portal, एक online application has been launched, that is the National Generic Document Registration System, NGDRS. Similarly, these all the initiative जो भी DILR MP के अंदर जो भी land records का updation होगा, उनका modernization होगा, उनका digitization होगा, all that will also be connected with the e-court as well. जो e-court initiative है Indian government का to we can say digitize all the courts in India, तो उसमें भी this will help a lot, because in the end प्रॉपर रिकॉर्ड्स हमारे पास होंगे तो दैट विल हेल्प इन यू कैन से रिजॉल्विंग द लैंड डिस्प्यूट सिग्निफिकेंटली. जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं, दे क्रिएट अ मेजर पोर्शन ऑफ द पेंडिंग you can say cases in the courts of India. So ये पूरा digitization will help a lot in reducing the land disputes in the region. Similarly, all the land records will also be translated into various
we can say the scheduled languages that are present in our constitution. तो constitution में जो 22 scheduled languages है under schedule 8, all these records will be translated into these particular languages. And the last one, there is also a Bhumi Samman Award as well. तो इसमें those districts जो districts इन सारी प्रोसेस को इनका अचीवमेंट करते हैं, प्रॉपर तरीके से डिजिटाइजेशन करते हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एन अवार्ड हैज बीन क्रिएटेड, दैट इज द Bhumi Samman Award. So these are all various different initiative under the Digital India Land Record Modernization Program. So coming back to the main news, that was नक्शा प्रोजेक्ट, एक न्यू प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने. द फुल नेम इज नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन. इसके थ्रू जो सिटीज हैं, इट इज अ पायलट प्रोजेक्ट जहां पर 150 सिटीज में जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, देयर विल बी अ क्रिएशन ऑफ अपडेटेड डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट इज द नक्शा project. And other initiatives की बात करें तो we have the Digital India Land Record Modernization Program. Along with that we also have a Swamitva scheme. Swamitva scheme basically will be used for mapping of land parcel in rural areas. तो जो रूरल एरियाज है वहां पे जो लैंड पार्सल है उनकी मैपिंग के लिए दिस पर्टिकुलर स्वामित्व स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड, एंड दीज आर द वेरियस इनिशिएटिव्स अंडर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. दैट इज वी हैव अ भू आधार या फिर यूएल पिन, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, which will be a 14 digit alphanumeric digit. Similarly, we have a system called an platform, that is National Generic Document Registration System, jahan par all the registration regarding process will be done. Then we have that ई कोड से इस पूरे के पूरे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इट विल बी, यू कैन से, लिंक्ड विद ऑल द लैंड रिकॉर्ड्स विल बी लिंक्ड विद द ई कोड इनिशिएटिव दैट इज going on in the judicial, you can say in the judicial system of India, and these land records will also be translated into various different languages, that is the 22 languages that are in the Constitution of India, that has been mentioned in the Schedule 8 of the Constitution. And the last thing, there is also a Bhumi Samman Award, similarly under the Digital India Land Record Modernization Program, jahan par various districts will be awarded when they are achieving all these things that are given under the Digital India Land Record Modernization Program. So that is the first news for the today. Moving on, the second one is there has been a creation of a new type of, you can say, a cloud-based platform, that is the Entity Locker. एक Entity Locker नाम से एक न्यू प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, एक क्लाउड बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है that has been created by National E-Governance Division under the Ministry of Electronics and Information Technology. So Ministry of Electronics and Information Technology के अंदर we have the National E-Governance Division, and this National E-Governance Division has created a digital platform. It's a cloud digital platform that by the name of Entity Locker. So it is a cloud-based digital platform. Now, what exactly do we have in this Entity Locker? So Entity Locker में क्या होगा? There will be the storage, sharing and verification of various business-related document. जो वेरियस बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और बिलोंगिंग टू सम स्टार्टअप, और बिलोंगिंग टू लार्ज कॉर्पोरेशन, और इवन ट्रस्ट एज वेल. सो इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट विद ईच अदर और विद द गवर्नमेंट एज वेल, इनकी शेयरिंग, इनकी स्टोरेज और इनकी वेरिफिकेशन के लिए दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हैज बीन क्रिएटेड बाय द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन. बेसिकली इट विल स्ट्रीमलाइन द होल बिजनेस प्रोसेस दैट गोज ऑन इन इंडिया, और यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग्स है उसमें दिस विल बेसिकली, यू कैन से, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग दोज रैंकिंग्स इन केस ऑफ इंडिया. सो अगेन, Entity Locker, it's a digital platform which has been created by National E-Governance Division of the Ministry of Electronics and Information Technology. This is a cloud-based digital platform. एक digital platform है जहां पे cloud-based services are available, and इसमें क्या होगा? Basically, the storage, sharing as well as verification of various different type of documents related to business, that is relating to various different sectors like MSME sector or various startup or some large corporation or even some trusts or societies that exist in India. उन सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स की स्टोरेज के लिए दिस पर्टिकुलर लॉकर हैज बीन क्रिएटेड, दैट इज द नेम बाय, दैट इज द एंटिटी लॉकर. सो दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन. सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वन, वी हैव अनदर पोर्टल बाय द नेम ऑफ भारत पोल. सो भारत पोल पोर्टल एक नया पोर्टल जो क्रिएट किया गया, दैट इज basically the full name of this portal is Broadcast Hub for Assistance and Real Time Action Against the Transnational Crimes. ये जो भारत पोल पोर्टल है, रिमेंबर दिस पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड फॉर
रियल टाइम कोऑर्डिनेशन विद इंटरपोल। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरपोल है उससे रियल टाइम कोऑर्डिनेशन के लिए दिस पर्टिकुलर पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड, दैट इज द भारत पोल पोर्टल, एंड दिस वाज क्रिएटेड बाय द सीबीआई। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस पर्टिकुलर पोर्टल को क्रिएट किया है। रिमेंबर सीबीआई इज द वन, द मेन, you can say the main body that coordinates with Interpol regarding the transnational crime। तो जो इंटरपोल है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो मेन नोडल बॉडी जो हमारे पास है दैट इज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसी प्रोसेस को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए दे हैव क्रिएटेड अ पोर्टल बाय द नेम ऑफ भारत पोल। सो भारत पोल पोर्टल, जिसका पूरा नाम है ब्रॉडकास्ट हब फॉर असिस्टेंस एंड रियल टाइम एक्शन अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल क्राइम, दैट इज द पोर्टल दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द Central Bureau of Investigation। Remember what exactly are the main features of this Bharat Pol? तो यहां पर there are 5 modules। First of all, there is the connect module जहां पर all you can say all the law enforcement agencies along with CBI, they will be, you can say, linked with the Interpol, we can say the officers of the Interpol। Second, notices वगैरह जो हैं Interpol के जो notices आते हैं, there will be a rapid transmission of these notices as well, basically because of the real time coordination। Then we have references that assistance will be given to Indian agencies as well by the Interpol as per this particular portal। Then broadcasting, you can say, will also be done in this particular case as well, and also you can say this particular portal provides access to relevant documents and capacity building resources in this particular portal। So Bharat Pol portal, just remember 2 or 3 important things। First of all, it has been created by CBI। Why it has been created? Because we can say कि they want to coordinate, or we can say they want to do a real time coordination with the Interpol। So to facilitate all this thing, or to, you can say, streamline all the process regarding transnational crimes that we have in India, this particular portal has been created। So that is the next thing, that is the Bharat Pol portal। No need to remember the full name, but at least remember the main things, that it is mainly, it has been developed by CBI, and CBI is the nodal agency to coordinate with Interpol in our nation। तो Interpol से related जो भी inquiries वगैरह हमारे पास आती हैं, if there is any case and all that is overseen by the Central Bureau of Investigation। And now to ease this particular process, they have created a portal by the name of Bharat Pol। So that is all about this one। Moving on, the next news we have regarding the wetland city accreditation that has been given to 2 cities in India, that is the city of Indore and Udaipur। तो इंडिया की 2 cities हैं, इंदौर which is in मध्य प्रदेश and उदयपुर which is in Rajasthan, that is the city of lakes। इन दोनों को ही wetland city accreditation this has been provided to these 2 cities under the Ramsar Convention। What is Ramsar Convention? Ramsar Convention is the convention on, you can say, it's an international convention on the conservation of wetlands of international importance। जो wetlands हैं international importance के wetland हैं, उनके conservation को लेके Ramsar Convention is there। And as per this Ramsar Convention, this new thing has been started, that is the wetland city accreditation program। और यहाँ पर इंडिया की 2 cities को दिया, 2 cities को this project has been awarded, that is this program has been, accreditation has been awarded। The first one is the city of Indore which is in Madhya Pradesh, और इंदौर में ही हमारे पास there is a Ramsar site by the name of Sirpur Lake। Similarly, we have the second city, that is the city of Udaipur, और उदयपुर में we have various different, it is surrounded by various different wetlands, that is Pichola is one of them, Fateh Sagar यहाँ पर है, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई, ये सारे के सारे 5 जो हमें wetlands मिलते हैं, all these are nearby to the city of Udaipur, and that is why for their proper conservation, in sites के proper conservation के लिए ही this particular accreditation has been awarded to these cities, that is the city of Indore as well as Udaipur। Remember, these are given by under the Ramsar Convention। Ramsar Convention जो 1971 में it was signed, and this was basically 2nd Feb is the day when this convention was signed, and it is also known as the World Wetland Day भी मनाया, as a World Wetland Day this has been celebrated as well, that is 2nd Feb को ही Wetland Day celebrate किया जाता है। And remember, इसके अंदर Ramsar sites are declared as well। So India में currently there are 89 Ramsar sites that is under the Ramsar Convention। And remember, there is another record under this one that is known as the Montreux record। तो Montreux record की जब हम बात करते हैं, when we talk about the Montreux record, you will see that there are 2 sites in India। तो 2 sites हमारे पास हैं। The first one is the Loktak Lake in Manipur,
and the second one is the Keoladev Ghana National Park, that is in Rajasthan. तो ये जो दोनों साइट्स हैं, these sites are also under the Montreux Record. Montreux Record basically it takes into account those wetlands जहां पर there has been some ecological changes have been observed because of human action. तो human action की वजह से जहां पर कुछ ecological changes आए हैं तो उनको हम Montreux Record में इंक्लूड करते हैं. और इंडिया से दो साइट्स ऐसी हैं, दैट इज लोकटक लेक इन मणिपुर, जहां पर हमारे पास कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी हमें मिलता है. That is the first site, and the second one is the Keoladev Ghana National Park, that is in Rajasthan. So these two sites are included in the Montreux Record under the Ramsar Convention. And when we talk about Ramsar sites in all, so there are total 89 Ramsar sites in India as of 2025. So abhi tak 89 sites have been declared as the sites, or we can say wetlands of international importance in India. So again, wetland city accreditation program, this has been awarded to two cities, Indore and Udaipur. And you can see Indore mein we have a wetland called Sirpur Lake, and Udaipur ke paas mein we have 5 different wetlands, that is Pichola, Fateh Sagar, Rang Sagar, Swarup Sagar and Doodh Talai. And all this accreditation has been awarded under the Ramsar Convention, which is the convention of basically this is the convention on इंटरनेशनल वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. और ये 1971 में कन्वेंशन साइन हुई थी, एंड 2 February यू कैन से इट इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वेटलैंड डे. टोटल 89 sites are there in India, that is Ramsar site, and out of these 89 sites there are 2 sites which are included in Montreux Record, again which comes under the Ramsar Convention. तो यहां पर 2 sites हमारे पास हैं, लोकटक लेक एंड केओलादेव घाना नेशनल पार्क, जिनको Montreux Record में इंक्लूड किया जाता है. So the thing regarding the WCA enlistment, that is wetland city accreditation enlistment में जो cities आती हैं, what are the major features that they have to follow? First of all, they contain Ramsar site providing ecosystem services. Similar, they have adopted measure for the conservation of wetland. Third, they have implemented wetland restoration and management measures. Fourth, they have integrated wetland planning into urban land use decision. Fifth criteria, that is they promote public awareness and local participation in wetland decision. And the last one, that they have established local committee for wetland management and Ramsar accreditation. So these are the 6 criteria for wetland city accreditation. Wetland city accreditation enlistment के लिए ये 6 के 6 criteria are important which have to be followed by all the cities. Again, no need to remember, this is just for your knowledge. आपको याद करने की जरूरत नहीं है. But remember the 2 cities that are there, that is the city of Indore and the city of Udaipur, which have been awarded the Wetland City Accreditation and award under, you can say, in the country of India. So इसी में we have the Ramsar Convention. Ramsar Convention we have 89 sites. Out of those 89 sites, 2 sites are also included in Montreux Record. And remember, Montreux Records में वो sites आती हैं जहां पर there has been some ecological change, especially in a negative impact of human action. क्यों ह्यूमन एक्शंस की वजह से कुछ नेगेटिव इंपैक्ट वहां पे पड़ा है, इकोलॉजिकल ऑर्डर में चेंजेस आए हैं, तो उन्हें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड किया जाता है. और 2 साइट्स हमारे पास हैं, दैट इज द Loktak Lake, that is in Manipur, and we have the Keoladev Ghana National Park, that is in Rajasthan. Remember, Chilka Lake was also one of the sites in Montreux Record, but this site was then again removed. तो उससे remove इसको कर दिया गया था. So that is all about this particular news. That is the Wetland City Accreditation which has been awarded to Indore and Udaipur in our nation. Moving on, the next important thing, a point that was there, that is Point Nemo. So this was in news recently. News में था, Point Nemo was in news. So what exactly is the Point Nemo? So Point Nemo is the most remote location on Earth. Pacific Ocean में ये location हमें मिलती है, that is known by the name of Point Nemo. और ये Point Nemo क्या है? This is basically the most remote location. Remote location in the sense कि दुनिया में land से जो सबसे ज्यादा दूर हमें जो region मिलता है, जो point मिलता है, that is basically the Point Nemo. And remember, this Point Nemo is in the Pacific Ocean. पैसिफिक ओशन में हमें ये पॉइंट देखने को मिलता है. नाउ व्हाई वाज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन न्यूज? तो रिसेंटली इंडिया का एक सेलिंग वेसल है, दैट इज द इंडियन नेवी सेलिंग वेसल बाय द नेम ऑफ तारिणी, which was again commissioned in the year 2017. तो अंडर द नाविक सागर परिक्रमा मिशन सेकंड, एक नाविक सागर परिक्रमा करके इंडियन नेवी का देयर इज अ ग्लोबल सर्कम नेविगेशन मिशन. तो उस मिशन के अंडर दिस आईएनएसवी तारिणी रिसेंटली क्रॉस द पॉइंट नीमो. तो पॉइंट नीमो से रिसेंटली ये आईएनएसवी तारिणी ये यहां से होते हुए गुजरा था, एंड दिस वाज अंडर द प्रोग्राम, और वी कैन से द
global circumnavigation mission of Indian Navy by the name of नाविक सागर परिक्रमा सेकंड। तो नाविक सागर परिक्रमा का सेकंड यहां पर मिशन जो है दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी, और इसके अंदर देयर आर 2 women officers who are commanding this particular mission। तो यहां पर 2 women officers हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। So these 2 women are leading this particular mission, that is the नाविक सागर परिक्रमा सेकंड मिशन। रिमेंबर, नाविक सागर परिक्रमा का जो फर्स्ट मिशन था उसमें देयर वर 6 women in all, और इस वाले में दैट इज इन द सेकंड मिशन वी हैव ओनली 2 women officer, दैट इज लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। सो पॉइंट नीमो, अगेन रिमेंबर पॉइंट नीमो इज द मोस्ट रिमोट लोकेशन ऑन अर्थ, और ये लोकेशन न्यूज में इसीलिए थी बिकॉज an Indian vessel by the name of INSV Tarini, it recently sailed past this particular point। और ये किस मिशन के अंडर किया गया था? दिस वाज डन अंडर द नाविक सागर परिक्रमा मिशन ऑफ द इंडियन नेवी। नाउ रिमेंबर, नाविक सागर परिक्रमा मिशन है क्या? ये एक ग्लोबल सर्क्यूम नेविगेशन मिशन है। बेसिकली इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर विल बी अ सर्क्यूम नेविगेशन ऑफ द होल वर्ल्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर vessel, that is the INSV Tarini, और यहां पर 2 women officers were, you can say, leading this particular mission। And remember, these 2 names are very important not just for prelims examination but mains के केस में भी these are the examples that when you are writing about your mains examination, so these are 2 very good examples that you can use in case of women empowerment, and you can say the अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन केस ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। तो वहां पर आप इन 2 लेफ्टिनेंट कमांडर्स, विमेन लेफ्टिनेंट कमांडर्स के नाम आप वहां पर यूज कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज। व्हेन यू लुक एट पॉइंट नीमो की आप बात करें तो यू कैन सी चिली से अप्रोक्सीमेटली 2600 माइल्स की दूरी पर ये है, देन न्यूजीलैंड से अप्रोक्सीमेटली 3000 माइल्स, एंड इवन फ्रॉम अंटार्कटिका इट इज मोर देन 600 और यू कैन से 1600 माइल्स। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द पॉइंट नीमो विच इज इन द पैसिफिक ओशन। यहां से सारा जितना भी आप लैंड देखोगे इट इज वेरी वेरी फार अवे, whether you talk about South America, whether you talk about Australia, whether you talk about Antarctica, this point is basically the most remote location on the earth। This is considered as the most remote location on the earth, यानी कि लैंड से सबसे ज्यादा दूर जो लोकेशन मानी जाती है, this is the point Nemo। So that it was in news recently because of this particular mission, that is the Navik Sagar Parikrama second, that is the Navik Sagar Parikrama mission 2, under which this was the vessel, that is the INSV Tarini, जिसके अंडर which sailed past through this particular point। And remember the names of the women commander, that is Rupa A and Dilna K, these were the 2 women commander which are leading this particular mission। So that is all about the point Nemo। Moving on, the next we have, there is another initiative that has been started by the government, that is by the name of भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव। भारत रणभूमि, रणभूमि बेसिकली मींस बैटलफील्ड। सो भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव इट वाज लॉन्च्ड ऑन 15 जनवरी को रिमेंबर आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड द 77th आर्मी डे ऑफ आवर कंट्री ऑन 15 जनवरी 2025। सो ये जो प्रोग्राम है, ये जो इनिशिएटिव है, दैट इज द भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव। दिस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड द इंडियन आर्मी। और इस मिशन के अंडर व्हाट एग्जैक्टली इज द एम ऑफ दिस मिशन? द एम इज दैट कि दिस प्रमोट्स बैटलफील्ड टूरिज्म। तो ऐसे बैटलफील्ड जहां पर इंडियन आर्मी हैज फॉट एंड वन द वॉर्स एंड डिफरेंट बैटल्स एंड ऑल, तो उन जगहों का टूरिज्म प्रमोट किया जा रहा है अंडर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, दैट इज द भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव। रिमेंबर इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड द इंडियन आर्मी। तो वेरियस मेजर साइट्स फॉर एग्जांपल लाइक रिजांगला एंड पैंगोंग सो इन लद्दाख, Kargil and Batalik and Dras in the Kargil sector, along with that Bumla in the eastern sector. So these are some major battlefields that belong to India, that belong to the wars of 1962, 1971 and 1999 Kargil war as well. तो ये कुछ sites हैं, these are some of the examples of the sites, and the government is trying to promote the tourism of these particular battlefields. तो इन battlefields के you can say the tourism to these battlefields is being promoted through this particular initiative, that is the Bharat Ranbhumi Darshan initiative. So that is all about this particular news. Remember ये एक important initiative है mainly because इसका tourism पे ज्यादा focus है। Remember ऐसा नहीं है कि the people are you can say invited to cross to the border and all regions, but यहाँ पर क्या होगा कि there will be a limited region, that is जहां पर there will be some restrictions, otherwise
you will say that कि यहाँ पर तक tourism is basically promoted by this particular scheme. Means some restrictions will be there. ऐसा नहीं है कि यहाँ तक पूरे proper तरीके से जाने दिया जाएगा. The thing is that there will be certain restrictions depending upon the situation of the particular region, but otherwise the government is properly planning to create a tourism, you can say, a battlefield tourism sector is being created by the government under this particular initiative, that is the Bharat Ranbhoomi Darshan initiative. And remember, this was launched on the Army Day that is celebrated on 15th of January every year. Or recently 2025 में we just celebrated our 77th Army Day, हमने अभी अपना celebrate किया, that is on 15th of January. And this is a joint initiative of Ministry of Defense, Ministry of Tourism and the Indian Army. And some of the major battlefields that will be, you can say, promoted under this one are रेजांगला. रेजांगला हमारे पास लद्दाख में हमें मिलता है, जहां पे 1962 में a war was fought. Major Shaitan Singh was the one who was leading the army here in the 1962 Indo-China war. He later got the Paramveer Chakra as well. Similarly, we have Pangong Tso. It's a lake as well. Pangong Tso, remember, is a lake in the Ladakh region. And then we have the Kargil, Batalik and Dras. These were all the battlefields during the 1999 Kargil war. And we have Bumla, that is also one of the site of 1962 war, that is in the eastern side, that is the Arunachal Pradesh wala region. वहां पर Bumla side भी हमें मिलती है. So this is the next news, that is the Bharat Ranbhoomi Darshan initiative. Remember, just ये term आपको याद रखना है, रणभूमि means battlefield. So through that you can easily tell whether this particular scheme is related to which thing. So it is related to, you can say, battlefield tourism. It basically aims to promote battlefield tourism in the Indian sector. Moving on, the last news for the day, it is a missile by the name of Pralay. So DRDO has recently developed a missile by the name of Pralay, and this missile was showcased during the 76th Republic Day, that is in January 2025. January 2025 76th Republic Day को ये Pralay missile was showcased, and this has been developed by the DRDO, that is the Defense Research Development Organization of India. Remember, this is a short range quasi ballistic missile. ये जो Pralay missile है, ये एक short range quasi ballistic missile है. Now what is this quasi ballistic missile? Basically, quasi ballistic missiles are those missiles which are capable of in flight maneuvering. मतलब जनरली होता ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आर प्रोपेल्ड इन द स्टार्टिंग फेज एंड देन दे गो टू द एटमॉस्फेयर, और उसके बाद दे फॉल कीपिंग इन माइंड द ग्रेविटी एंड ऑल. तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से दे फॉल टू देयर टारगेट. बट क्वासी बैलिस्टिक रेंज में या क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल में व्हाट इज द मेन डिफरेंस? द मेन डिफरेंस इज दैट यहां पर इन फ्लाइट मैन्यूवरिंग कैन बी देयर. मींस यू कैन चेंज द पाथ ऑफ द मिसाइल डिपेंडिंग अपॉन द एल्टीट्यूड की, कितने एल्टीट्यूड तक हो गई है, वहां पर आप जाके क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल में आप उसकी लोकेशन को, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. दैट मींस इट इज capable of in-flight maneuvering, and this was recently showcased at the Republic Day 2025. So just remember the name of the missile, that is the Pralay missile, which was showcased in 76th Republic Day. Now coming to the next part in this one, we have two types of missile that we have here. That is, one is ballistic, the other one is cruise missile. Now सबसे पहले तो what exactly is the difference between a ballistic missile and a cruise missile? So always remember, a ballistic missile जो भी होती है, it goes to the atmosphere. ये atmosphere में जाती है, it goes upward, यानी कि it follows this kind of trajectory. It goes to the atmosphere and then it falls under the influence of gravity. यानी कि यहां से लॉन्च हो रही है तो first it will go to atmosphere and over the period of time इसका target fix होगा and over the period of time it will fall under the influence of gravity under the target. Similarly, we have second type of missile that are known as cruise missile. अब cruise missile क्या करती हैं? Cruise missile generally they go like this. Means ये space में नहीं जाती, they basically go parallel to the horizon. जो हमारा surface है उसके parallel ये travel करती हैं and then they attack the whatever target that is there. So remember, India की जब हम बात करते हैं तो major जो ballistic missiles हमारे पास हैं, दैट इज अग्नि सीरीज की जो मिसाइल है या पृथ्वी सीरीज की जो मिसाइल है, देन धनुष मिसाइल जो हमारे पास है, these along with that we have a शौर्य मिसाइल, एक recently developed missile as well. This is basically, remember, it is a hypersonic missile. Hypersonic because इसकी जो स्पीड है that is more than 3 Mach. जो साउंड की स्पीड होती है उससे 4 टाइम्स ज्यादा इसकी स्पीड देखने को मिलती है. सो शौर्य, it has been recently launched, एक बैलिस्टिक मिसाइल है which again has
which again can attain hypersonic speed. Similarly, जब हम क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो जो ब्रह्मोस सीरीज हमारे पास है, that is the BrahMos and the निर्भय मिसाइल. So ये दोनों ही मिसाइल कैसे मिसाइल हैं? These are considered as cruise missile. So again remember what is the major difference between cruise missile and ballistic missile? Ballistic missile will go to the atmosphere. वो एटमोस्फेयर में जाएगी और फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से फॉल करेगी. सेकंड वी हैव क्रूज मिसाइल. तो क्रूज मिसाइल विल गो लाइक दिस कि दे विल फ्लो पैरेलल टू द सरफेस. सरफेस के पैरेलल होते हुए दे विल अटैक द target whatever the target is there. So that is all about this particular news as well. Remember Pralay missile was showcased on the 76th Republic Day and it is basically a quasi ballistic missile. Remember quasi ballistic missile matlab for example ek general ballistic missile will go, it will be propelled in the starting part and then it will fall under the influence of gravity. But quasi ballistic missile mein ye jo aapko trajectory dikh rahi hai, this trajectory can be changed. यानी कि देयर कैन बी इन फ्लाइट मैन्यूवरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिसाइल. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ क्वासी ballistic missile. So that is all about this particular one. And remember the differences between a ballistic and a cruise missile. Ballistic missile remember goes to the atmosphere and then falls under the influence of gravity. But cruise missile में ऐसा नहीं होता. Cruise missile it flows parallel to the surface of the earth and then it attacks the target. And major जब हम missiles की बात करेंगे तो इंडिया में we have the Agni missile, the Prithvi, Dhanush और शौर्य missile है. शौर्य remember it is the first hypersonic missile that has been indigenously developed in India. So these are all ballistic missile. And when we talk about cruise missile, तो जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, that is one of the most famous one in the world. It is a cruise missile. Along with that, Nirbhay is also a ballistic missile as well. So this basically brings an end to the current affairs for this particular topic. So we have discussed majority of the current affairs in this particular one. So Naksha project के बारे में हमने बात की. That is the first one launched by the rural development and remember this is mainly for updation of land record. The second thing we talked about is the entity locker, which is a digital platform launched by the National E-Governance Division under Ministry of Electronics and Information Technology. Remember यहाँ पर business documents की storage, उनकी sharing और उनकी verification के लिए पोर्टल यहाँ पर बनाया गया है. Then we have the Bharat Pol portal as well, which has been created by सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और किस लिए बनाया गया है? टू यू कैन से फॉर रियल टाइम कोऑर्डिनेशन विद इंटरपोल. तो जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंटरपोल, उसके साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन के लिए दिस पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वी कैन से द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. Then we talked about the wetland city accreditation. तो इंडिया में दो cities हैं, the city of Indore and the city of Udaipur, which has been awarded this particular wetland city accreditation. Remember, wetland city accreditation is given under रामसर कन्वेंशन, जिसके अंडर इंडिया में टोटल 89 साइट्स हैं और इन्हीं 89 साइट्स में से दो साइट दैट इज लोकटक लेक एंड केवलादेव घाना नेशनल पार्क, दीज आर आल्सो अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एज वेल. देन we have the point Nemo. Point Nemo, remember it is the most remote location on earth और कहां ये fall करती है? This is in the Pacific Ocean. Why was this in news? Because INSV Tarini, which is the Indian naval sailing vessel, it recently crossed or we can say sailed past this particular point. Remember there is a mission going on, that is Indian Navy का एक mission चल रहा है, that is the नाविक सागर परिक्रमा मिशन. द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन, जो पहला वाला जो फेज था इस मिशन का और जो पहला मिशन था उसमें देयर वर टोटल 6 women ऑफिसर्स इन दैट पर्टिकुलर वन लीडिंग दैट प्रोजेक्ट. बट ये वाले मिशन में देयर आर ओनली 2 women ऑफिसर, दैट इज लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के. सो दिस इज बेसिकली द program that is the or we can say a mission by the name of National Navik Sagar Parikrama Mission 2nd. Then we talked about the Bharat Ranbhumi Darshan initiative. So remember Bharat Ranbhumi Darshan initiative, it promotes battlefield tourism in India. तो जो इंडिया ने जो wars लड़े हैं, जो battles fight किए हैं, तो उन जगहों को as a tourism place develop करने का target is under this particular initiative called the Bharat Darshan initiative. और remember this was launched on Army Day, that is the 77th Army Day. And when do we celebrate the Army Day? We celebrate it every day on 15th of January. So that was the one. And the last news for the day, that was the Pralay missile. Remember, it is a quasi ballistic missile. Quasi use करने का यहाँ पर मतलब क्या है? Why is it a quasi ballistic missile? Because generally ballistic missile में in flight maneuvering is not really possible. So जिनमें possible होती है, जिन ballistic missile में in flight maneuvering is possible, they are termed as quasi ballistic missile. This was showcased on 76th Republic Day and that is basically, you can say it's a quasi ballistic missile. So it will go into the atmosphere and then attack its
target. And remember, it is also short range ballistic missile as well. ये long range नहीं है, it is only a short range missile in which is capable of in-flight maneuvering. And when we talk about ballistic and cruise missile, so you can see there is a difference. Ballistic missile goes into the atmosphere first and then falls to the target, but cruise missile parallel जाती है surface के and then it attacks the target whatever is there. And when we talk about India, तो इंडिया में बैलिस्टिक मिसाइल्स की हम बात करें तो अग्नि सीरीज, पृथ्वी सीरीज या धनुष मिसाइल और शौर्य मिसाइल विच इज अ रिसेंटली लॉन्च्ड वन विच इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल, तो दीज आर ऑल बैलिस्टिक मिसाइल्स. वाइल क्रूज मिसाइल की हम बात करें दैट इज विच डू नॉट गो टू द एटमॉस्फेयर एंड डायरेक्टली फ्लो पैरेलल टू द सरफेस. क्रूज मिसाइल में हमारे पास ब्रह्मोस एंड निर्भय मिसाइल्स आर देयर, एंड दैट बेसिकली ब्रिंग्स एन एंड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो एज well. So this is all about the current affairs from the month of January. Total 3 videos have been uploaded. The earlier 2 videos you can watch on the channel as well. We'll be starting this series. We'll be continuing this series with the current affairs of Feb month as well. So that is all for this particular video then. Thank you.